Here we bring another interesting video in the WIP series of vocabulary. Hello everyone, I am Om Prakash Walani and welcome to my YouTube channel Think Guild Nexus. In the WIP series of vocabulary, today our word is ambiguous. Ambiguous. Word ambiguous की definition आप किस तरह से बताते हैं? Having more than one possible meaning, मतलब कि एक से ज्यादा मीनिंग्स हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज है जिसकी मीनिंग या मतलब जो है वो एक से ज्यादा निकलते हों, तो इस वजह से हम उन चीजों को सही से समझ नहीं पाते कि कौन सी बात की गई है, फर्स्ट मीनिंग है, सेकंड है, थर्ड है, जो डिफरेंट मीनिंग्स हैं उनके अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो उस सिचुएशन के लिए या उन मीनिंग्स के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस, इसका आप एग्जांपल इस तरह से ले रहे हैं, his statement was ambiguous. His statement was ambiguous. If we talk about synonyms, इसके synonyms होंगे unclear, vague, vague. ये दो synonyms हैं इसके, unclear and vague. For antonyms आप words use करते हैं clear, definite, clear, definite. So this is our word of the day in the WIP series of vocabulary. Ambiguous, which means having more than one possible meaning. Now, let's see the idiom of the day. The idiom of the day is beat around the bush. Beat around the bush. Idiom beat around the bush means avoid the main point. जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज है, उससे हटकर कोई और चीजें करना, इधर उधर की बातें करना या मेन पॉइंट को इग्नोर करना, उस सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं इडियम बीट अराउंड द बुश। एग्जाम्पल आप इस तरह से ले रहे हैं, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब कि इधर उधर की बातें करना बंद करें, आप सीधा मेन पॉइंट पे या मेन बात पे आ जाएं। फॉर सिनोनिम्स आप वर्ड्स यूज करते हैं evade, evade, sidestep, sidestep, procrastinate, procrastinate, procrastinate. So ये आपके पास हैं synonyms, evade, sidestep, procrastinate. And for antonyms we have words or word pairs as be direct, speak plainly. So this is our idiom of the day, beat around the bush, which means avoid the main point. Now let's see the phrasal verb of the day. Our phrasal verb of the day is phase out. Phase out means to gradually stop using something. किसी चीज को इस्तेमाल करने से रोकना, but that is gradually. ग्रेजुअली रोकना, स्टेप बाय स्टेप, एकदम से उस चीज को नहीं रोकना है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप हमने उन पे पाबंदियां लगानी, उनको रोकते जाना है। इसका आप एग्जांपल इस तरह से लेंगे, ओल्ड पॉलिसीज वर फेज्ड आउट, मतलब कि जो भी हमारी पुरानी पॉलिसीज थी उनको फेज आउट किया गया। फेज आउट किया गया मीन्स उनकी इम्प्लीमेंटेशन रोकी गई, बट वो एकदम से नहीं रोकी गई, उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो रोका गया। लाइक पहले थोड़ी सी लिमिटेशन, उसके बाद थोड़ी और ज्यादा लिमिटेशंस, और इस तरह से कंटिन्यूली जो है वो वर्क किया गया, और लास्ट में इन पॉलिसीज को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया ग्रेजुअली। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्रेजल वर्ब फेज आउट, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। फॉर सिनोनिम्स ऑफ फेज आउट हमारे पास वर्ड्स होंगे eliminate, eliminate and discontinue. And for antonyms we have words introduce, implement, implement. So this is our phrasal verb of the day, phase out, which means to gradually stop using something. So this is all about
the WIP series of vocabulary today. Thank you for watching and subscribe my channel for watching interesting videos of vocabulary.